बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिक से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर के शॉर्ट आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if we decompose 0.1 mole per decimeter cube of N2O5 at 45 degrees Celsius, then after 24 minutes 0.05 mole decimeter cube of N2O5 will be left behind. Similarly, after 48 minutes 0.025 mole per decimeter cube of N2O5 will remain unreacted, and so on. Decomposition of N2O5 is a first order reaction, and the above experiment proved that the half-life period of this reaction is independent of initial concentration. Question number 2, differentiate between autocatalysis and promoter. If some reactions the product produced as a result of reaction start acting as a catalyst right after its production, such type of catalyst is also known as autocatalyst. The substance which enhances the activity of catalyst is called promoter. It is known as catalyst for the catalyst. Differentiate between homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. If reactant and catalyst are in same phase, called homogeneous. If they are in different phase, then they are called heterogeneous. Usually reactant and catalyst both are either in solution or gaseous state. In this type, reactant are either in gaseous or liquid phase, but catalyst in solid. Question number 4, equilibrium constant of reversible reaction is not changed in the presence of catalyst. Explain. Question number 5, what is meant by enzyme catalyst? What is poisoning of catalyst? Question number 7, rate of reaction change with time. Why? In the beginning, the reactant are present in excess, but as the reaction proceeds, the reactant are consumed and their concentration decrease in the reaction mixture. So that's why rate of reaction decrease with the passage of time. Differentiate between rate and rate constant of reaction. इन दोनों में हमने डिफरेंस करना है. क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिएक्शन रेट डिक्रीज एवरी मोमेंट बट रेट कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन. इसमें हमने ग्राफ बना देना है और इसका आंसर लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 10, दिस यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, बट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. The sum of coefficient of a balanced chemical equation is not necessarily important to give the order of reaction. 50% of hypothetical first order reaction complete in 1 hour. The remaining 50% need more than 1 hour to complete. Question number 13, the order of reaction is obtained from the rate of expression, but the rate expression of reaction is obtained from the experiment. Change of physical state of catalyst at the end of reaction. A very small amount of catalyst may prove sufficient to carry out a reaction. A finely divided catalyst may prove more effective. A catalyst is specific in its action. So dear students, यही थी आज की वीडियो. होप सो आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा. तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.